students, welcome to Glowing Minds. I am your accounts mentor and we are doing class 11 accountancy. We are discussing some important basic accounting terms in this video. As I told you earlier, these are very important terms if you want to understand accounting properly. Today's first term is expense. Expense is any cost which a business incur to generate revenue. रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है उसको एक्सपेंस की कैटेगरी में रखते हैं. एक्सपेंस के एग्जांपल्स हैं लाइक if any business pays salary, electricity bills, stationery, these all are expenses. Um, if there is any depreciation on any asset, this is also expense for the business. Expenses दो तरह के होते हैं and it's important to understand all these two expenses because their accounting treatment is different. First type of expense is prepaid expense. As the name suggests, it's prepaid expense जो कि एडवांस में पे कर चुके हैं. इनका अभी बेनिफिट नहीं मिला है, इनको हम पे कर चुके हैं. These are called prepaid expense. For example, अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे कर दिया है तो वो प्रीपेड एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है. Some other examples of prepaid expense are if any business has paid salary to its employees in advance, that is prepaid expense. If rent has been paid in advance, that is also called prepaid expense. Prepaid expense is current asset for the business. Current asset we have discussed in part 1 of this chapter. It's very important to understand prepaid expense because इसको current asset की category में रखते हैं. Next type of expense is outstanding expense. Outstanding expense is reciprocal of prepaid expense. Prepaid expense से उल्टा है. Outstanding means which we have not paid. इसका बेनिफिट उठा चुके हैं, इसका बेनिफिट मिल चुका है, ये इनकर हो चुके हैं बट पे नहीं किए हैं. These are called outstanding expense. For example, if the enterprise has not paid to its employees their salary since last 2 months, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाता है. मीन्स वो एम्प्लॉयज की सर्विसेज ले चुका है लेकिन उनको अभी पे नहीं किया, तो दैट सैलरी इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. रेंट एक्रू हो चुका है, मीन्स रेंट अभी पे नहीं किया है लास्ट 2 और 3 मंथ्स का और सम मंथ्स का, तो वो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में है. Outstanding expense is current liability for the business. इसको डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं. प्रीपेड एक्सपेंस से डिफरेंट है ये. प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों टर्म्स. नेक्स्ट इज इनकम. इनकम is profit. एक्चुअली इनकम जो है वो रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस है. मींस अगर रेवेन्यू किसी बिजनेस के रेवेन्यू उसके एक्सपेंसेस से ज़्यादा हैं तो
उस बिजनेस को इनकम हुई है। इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। इनकम और प्रॉफिट डिफरेंट है बिकॉज इनकम जो है उसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दोनों इंक्लूडेड। मीन्स ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो इनकम हुई है वो इनकम की कैटेगरी में आ जाती है। देन प्रॉफिट। प्रॉफिट और इनकम में जो डिफरेंस है, प्रॉफिट भी एक इनकम है बट ओनली फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इनकम हुई है उसको प्रॉफिट बोलते हैं, क्योंकि बिजनेस में ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों तरह की एक्टिविटीज चलती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मींस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो रूटीन में होती है, रूटीन में जो काम हो रहा है। ओके, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मींस जो रूटीन में नहीं होता है, इंसिडेंटल, कभी कभी होता है। जैसे कि कभी कोई मशीनरी सेल करनी पड़ गई है, कभी कोई बिल्डिंग सेल करनी पड़ गई है, तो उससे भी तो इनकम होगी। ओके, वो प्रॉफिट के अंडर नहीं आती है। प्रॉफिट डिफरेंट है, प्रॉफिट सिर्फ उसी इनकम को बोलते हैं जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हुई है। ओके, प्रॉफिट दो तरह का है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। देन gain. Next accounting term is gain. Gain is different, is also different from profit. Gain जो है वो incidental है. Incidental means कभी सडनली किसी एक्टिविटी से जो प्रॉफिट हो जाता है वो गेन है। गेन से ऑनर की इक्विटी इंक्रीज होती है। ऑनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल। गेन इंसिडेंटल है। फॉर एग्जाम्पल, company has sold its land due to some reasons, तो उससे जो इनफ्लो होगा वो गेन कहा जाता है, उसको गेन कहा जाता है। कंपनी, इफ एनी कंपनी से हैज सोल्ड इट्स मशीनरी, तो उससे जो इनकम हुई उसको भी गेन कहेंगे। तो गेन इज, ये जो है ये नॉन रेकरिंग नेचर का है, मींस इंसिडेंटल। Gain is not from day-to-day activities. This is incidental. It means it occurs sometimes, not in routine. All these are similar terms with some little difference. So it's important to understand these: income, profit, gain, etc. Then loss. Loss when expenses are more than the revenue, so that is called loss. इससे कैपिटल कम हो जाती है। जब प्रॉफिट होता है तो ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज होती है, जब लॉस होता है तो ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज होती है। ऑनर्स इक्विटी मींस कैपिटल ऑफ द बिजनेस। लॉस इंक्लूड्स all losses incurred in from its operating activities and from non-operating activities. Then purchases. Purchases यहाँ पर normal purchases नहीं। Here purchases means purchase of only those items in which that business deal. अगर किसी बिजनेस ने कुछ कोई गुड्स और रॉ मटेरियल परचेज किया है फॉर रीसेल पर्पसेस, दैट इज कॉल्ड परचेजेस। और रॉ मटेरियल परचेज किया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, दैट इज कॉल्ड परचेजेस। सपोज in a cloth business, if company purchases some fabric for the manufacturing of ready-made garments, then purchases of fabric
is can be called purchases. Or in a trading business, cloth trading business, if a company purchases some ready-made garments for resale purposes, then those are called purchases of goods. Purchases include cash as well as credit purchases. Purchases return. Next term is purchases return. Sometimes the goods which a company has purchased can be returned, may be returned due to some reasons. Maybe they are defective, maybe they are excess than its use, then that is called purchases return or return outward. Next accounting term is sales. Here, sales means sale of only those goods and services in which that business did. For example, in a cloth business, if a company sells its ready-made garments, then sale of ready-made garments can be termed as sales. Sale can be of two types: cash sales and credit sales. Then sales return. Sometimes the goods which the company has sold may be returned by the purchaser due to some reasons. That is called sales return or return inwards. Next is revenue from operations. Revenue from operations, as the name suggests, revenue that the business has generated from its operating activities. That is called revenue from operations. इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्लूड नहीं होती. मीन्स ये जो रूटीन में एक्टिविटीज होती हैं जिसमें वो बिजनेस डील करता है, उनसे जो रेवेन्यू हुआ, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. फॉर एग्जांपल, सेल ऑफ गुड्स मीन्स जो गुड्स की सेल की है उससे जो रेवेन्यू आया है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज गुड्स. नाउ व्हाट इज गुड्स? गुड्स ऐसी सारी आइटम्स जिनमें की जिनका ट्रेड किया जाता है, जो वो बिजनेस जिनका ट्रेड करता है, उनको गुड्स बोलते हैं. मीन्स any item which the business has purchased for resale purpose or which the business has purchased to convert it into finished goods. Okay, those are goods. Means any item in which that business deals. For example, for any home appliances company, TV, fridge, AC, etc. are goods for that company. Goods means items in which that business deal. Then stock. Stock or inventory. Stock or inventory is asset for the business. ऐसी assets जिनको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रीसेल पर्पस के लिए रखा होता है, लेकिन अभी सेल नहीं हुई है, जिनकी अभी सेल नहीं हुई है, ऐसी आइटम्स जो कि कंपनी के पास पड़ी हैं अभी, उनको स्टॉक बोलते हैं. स्टॉक जो है, फॉर एग्जांपल क्लॉथ बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं. क्लॉथ बिजनेस के एग्जांपल इसमें अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो रेडीमेड गारमेंट्स के लिए फैब्रिक परचेज करती है और उससे रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, तो जो रेडीमेड गारमेंट्स अभी सेल नहीं हुए हैं वो स्टॉक है, वो उस बिजनेस के लिए स्टॉक या इन्वेंट्री है. इसी तरह से जो फैब्रिक कंपनी ने परचेज किया है
उस फैब्रिक को अभी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं किया है तो वो फैब्रिक भी स्टॉक है, रॉ मटेरियल का स्टॉक है। ओके, सो दिस इज स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक दो तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। These are very important, these two are very important. ओपनिंग स्टॉक मीन्स स्टॉक जो कि अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग में जो बिजनेस के पास स्टॉक है उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, और जो क्लोजिंग स्टॉक है जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो स्टॉक है कंपनी के पास उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। So that's all for today, students. Please revise these terms so that we can discuss third part of this chapter and you can understand all the terms easily. Thank you.